Welcome back. Welcome back to the channel होम्योपैथिक मेडिकोसिस #होम्योपैथिक फॉर ऑल। होम्योपैथिक मेडिकोसिस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की ड्रग नक्स वोमिका के बारे में, और आज हम एक और मेडिसिन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग अहेड, here is some inspiring words, that is fear kills more dreams than failure ever will. So सोचने वाली बात यह है कि अगर चीज़ों को हम करते रहें फेलियर को से डरे बिना, तो हम ज़्यादा कामयाब होंगे rather than उनसे डरते रहने की। So today we will discuss a new drug, that is Carbo Vegetabilis. Carbo Vegetabilis is very deep acting antisoric remedy, and its common name is vegetable charcoal. This remedy is prepared from black charcoal, the charcoal obtained from any kind of wood which has been heated to red heat to drive off the gases. किसी भी लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बनता है, ये मेडिसिन उसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथी में बनाई जाती है। एंड द पोटेंटाइजेशन वर्ड इन होम्योपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ द रूट ऑफ डायनेमिसिटी, दिस इज़ द रूट ऑफ द डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन। सो सम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द कार्बो वेजिटेबलिस। फर्स्ट इज sluggishness. Actually, sluggishness, laziness, tersisense, these is basic 3 pathogenesis of carbo vegetabilis. There is passive hemorrhage in carbo vegetabilis. There is hunger of oxygen. The patient used to cry, "Fan me, fan me." There is vital force nearly exhausted, never able to recover from previous illness. Economy sluggish, turgid, distended, swollen. The body will be sluggish, distended or swollen, flabby. Coldness of lower extremities, internal burning and external coldness. So here these are basic characteristic symptoms, the keynote symptom, the symptom that should be present in the patient for the prescription of Carbo Vegetabilis. Maybe हमें सारे symptoms ना मिले, बट इसमें से most of the symptom available होनी चाहिए, present होने चाहिए patient में to prescribe Carbo Vegetabilis. Here sluggishness, laziness, tersisense is the most marked symptom. Moving on to the generalities. First we will talk about the mental generals, and then the physical generals will come later. Mental generals, in mental generals we will talk that mental state. What is the mental state? जहाँ हमने देखा laziness है, sluggishness है, वही चीज़ हमें मेंटल स्टेट में भी मिलेगा। स्लो, sluggish, stupid, lazy, mental exertion leads to fatigue, full of anxiety, in the dark with dyspnea. एंजाइटी कहाँ होगी? डार्कनेस में, डिस्पनिया के साथ। एंजाइटी सो ग्रेट, कैन नॉट लाई डाउन। वैसे भी पेशेंट ड्यूरिंग एंजाइटी डोंट वांट टू लाई डाउन, उससे एंजाइटी और बढ़ती है। स्लीप ऑफुल ड्रीम्स, जब भी सोता है तो बहुत ज़्यादा भयानक या डरा देने वाले सपने देखता है। फायर बॉर्गल्स एंड हॉरिबल थिंग्स, इनडिफरेंस। Horrible things do not seem to affect him much, and pleasant things do not affect him either. That weakness of memory, that confusion of mind, and that benumbed inability to think. So the indifference is that कि उसे कोई अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खुश नहीं करेगी, या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके साथ अगर कुछ अच्छा हो जाए, या कुछ बुरा हो जाए ना, उससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। सो इनडिफरेंस इज जस्ट लाइक कि कुछ मतलब ही नहीं है अपने सराउंडिंग्स। एंड देन देयर इज कन्फ्यूजन ऑफ माइंड इन इट, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, दैट benumbed inability to think.
So moving ahead to the physical generals. In physical generals, we will see that elements from quinine, abuse of mercury, salt meats, spoiled fish, सड़े हुए fish यानी कि बासी मछली, meat, fats, from getting overheated, just like you can see the gelsemium, the gluonine, the lachesis. These are generals, physical generals, the overall symptom which is affecting the body. Vital power nearly exhausted, desire to be constantly fanned, as we seen in the characteristic symptoms. Sluggishness, laziness on the physical level too, craves whiskey, brandy, things that make them sick. Old people especially craves for whiskey and brandy, and that craving for whiskey and brandy we will see on his face after few ml of intake of whiskey or brandy leads to that flushing of the face, that is prominent symptom in the carbovegetables as described by the Kent. Passive hemorrhages, dark black blood, as there is no activeness in this, there is sluggishness, so hemorrhages will be passive from any broken down condition of mucous membrane. Burning throughout the body, internal burning but external coldness, icy coldness with a cold breath, and there is absence of any tonicity in the blood vessels, relaxed blood vessels, stagnation of blood vessels, sluggishness again marked, that sluggishness in the healing process, that slowness in the healing process. So these are basic physical generals, these are basic generalities in the other sense of carbovegetables. Thanks for watching, and other parts